Sara ma'am. Sai Ram. Ramisha, Yes ma'am. you've gone through that syllabus carefully now of 9th standard? Ma'am, not that much. Okay. And Mahesh, what about you? There was a change in the letter writing. I think letter to the editor is not there na, anymore. Is it so? Mahesh? Ma'am, he is not there. Okay, Pushkar, do you know that? Ma'am, I am seeing. You can check it. You got Yes, ma'am. Ma'am, check it. Huh? ma'am, in that PDF, it is written that deleted part, letter on situation is deleted. In that Letter PDF, on this is, situation. yes, ma'am. It's not editor. No, ma'am. Ma'am, it is the deleted part. Just read that sentence. What is written, Archie? Ma'am, the heading is deleted part, and next to it, it is written that letter of situation. That's it. Okay. In Fine. writing part. Okay, fine. Now, what I would like to do, today I would like to start with the written part actually. By now, you must have got to know that probably you're having your half-yearly exams in the month of September, isn't it? Right? So, I want to give time for revision also, and I want to touch the written part and grammar part, both. Fine. So for that, last year also, luckily, I was teaching you, and we had done that story writing, if you remember. Isn't it that one-liners? You got that in half-yearly, Yes, I think ma'am. in annual also, isn't it? But आप लोग उतने उसके साथ friendly अभी भी नहीं हो. Yes, for that the language has to be good, and in this your imagination, your creativeness will come into account. क्योंकि उस स्टोरी को आप कैसे भी ले सकते हो, किसी भी ढंग से आप उसको एक हॉरर वाली भी बना सकते हो, एक इंस्पिरेशनल, इफ इट इज इंस्पिरेशनल इट इज वेल एंड गुड, because such inspirational stories fetch you a lot of marks. Okay, so today's topic what we are going to take is actually story writing. Then I will move to letters. That is why I was checking on letters. And last year, if I remember, Ramisha, do you remember which letters did I touch? Yeah, ma'am, that application type letters. Letter to editor. Editor we had done. Even business letters we had done, I think. Like writing to the municipal corporation or something. Yes, ma'am. Okay, fine. Uh, so today what we'll do is on my personal window, Ramisha, you check your grammar copy of last year or classwork in whichever you have written, and just tell me which type of letters, or you can take a click of it also and send. Okay? Yes, So that I ma'am. know what all I have already done. I won't want to touch that again. And others also, please, अपनी पुरानी वाली 8th standard की grammar copy या your classwork, if it is there with you, I hope it is there. उसमें मैंने काफी samples कराए थे. You can just go through that also for revision. Okay? And today what we'll do is, we will begin with the story writing part. And yes. Yesterday I found out these links which I could connect with, and I wanted something that is a little easy to understand in English. Okay? Hello students, I'm Ruchika and I welcome you to the English Academy. Here I have a lesson for students of class 10 on how to write short stories.
Short stories is a creative writing skill, and you can improve it by practice and by improving your vocabulary skills. So let us see what all it involves. Firstly, it is a matter of fiction or your imagination. You have to be very creative to write an interesting short story. You should use easily understandable grammatical structures or sentences so that it is easier for the reader to understand the story. It should go with the natural flow of speech. It should not be very difficult or should not involve a lot of drama. Short story is meant to be read at a single sitting. As you know, it is a short story, and therefore it should be as direct and brief as possible. These are the 5 main elements of a short story: character, setting, plot, conflict, and theme. I will discuss these one by one with you. Character. These are the persons which you introduce in the story. They can be some animals, or you can use your own creativity. They should have some meaningful dialogues. The dialogues should have some expressions so that it gives the reader some kind of an interesting material to read, and he is attached to the story. He can relate to the story. Give a characterization of the characters that you introduce. Characterization means that you describe the characters. Use some adjectives, some interesting words to describe the characters, like how they look, how they behave, how they dress up. Some make it something more different and interesting. You can choose a narrative of the story. It could be in the first or the second or the third person, and you should maintain it throughout the story. Fewer is better. Try and keep minimum number of characters. This is the golden rule for characters in the short story. As the story is short, so if you will have a lesser number of characters, it will be easier for you to maintain them in the story. Yeah, this is a very good point which I found. Fewer is the better. Means जितने कम आप characters रखोगे story में उतना better है, because you people know that you have a word limit. You have a word limit, and this time maybe it's even more shorter. Okay, because it's first time even you people are giving the online exam, and even we are conducting one. So it's going to be an experience for both of us. It's good that you people are seniors and it won't be such a difficult task for you people. But you should understand that when you write a story, the more characters you bring into the story, उतना वो complicated हो जाता है. आपको उसको handle करना भी आना चाहिए. इसलिए जितने कम characters रखोगे, आपकी story free flow में जाएगी. It will be more manageable. Okay. The next element, setting. Setting is the time frame and the place where the story is set up. It should be brief, but try and make it more poetic and descriptive. Give a good description of the setting. Give the description of the scenes. Keep it short and single. This is the golden rule for the setting, that there should be only one setting where the entire story takes place, and it should not be very, very descriptive, okay? It includes the location of the story, the context, and the atmosphere where the story is happening. The next element, plot. The plot should also be simple and interesting at the same time. This is the flesh and the muscle of the story. So the whole story revolves around the plot. Now, I will suggest you that don't make it very simple so that it is not at all interesting, and do not complicate it too much that the audience, that the reader cannot correlate with it. So you have to keep in mind the person who is reading the story, how it will be interesting for him, okay? Because you want more and more people should read your stories. This includes the start of the story, the body, and the end. So this is a basic outline of the story.
And you have to link all these three stages together with events and actions of the characters. You have to describe and connect the events and actions, and you should be very creative so as to make it more interesting. The next element, conflict. You can put some conflict, some matter of conflict in your story just to make it more interesting and make the reader more inquisitive. And this is the golden rule for a conflict, that it should be very intense, but one. Now, why it should be one? Again, because as it is a short story, it has to be short, and so you can only try and manage one conflict in the story. The next rule, resolve the conflict. So whichever conflict you have introduced, so then you use the characters which you have introduced to resolve this conflict. The next rule, opposition between the characters. Now this is a kind of conflict which you can introduce. You can create an opposition between the characters of the story. And then you can make a balance between these opposite characters. You can use these elements in your conflict. They can be mystery, empowerment, or surprise. This is the next element, theme. Theme is the framework of the story. It includes the plot, setting, conflict, and the characters. All of these have to be in coherence with the theme. Theme should be such that it is related to the readers. They can correlate to it. They can understand it in a very easy way. This is the central idea or the main belief of the story. This is the backbone of the story. Then the last but not the least, the ending. How should you end the story? You can resolve or you can give a solution by your own self. It could be an open-ended type of ending, like the reader has his own views about the conflict and the characters which you have given in the story. It could also be a resolve and a clear-cut outcome. You can resolve the conflict and give a single solution to it. It could be parallel to the beginning. You can come back in a circle from where you had started the story and end it there only. It could also be a monologue by the central character which you have introduced, or it could be a dialogue between two characters. You can also end the story with an image. You can describe a scene and just close the story like that. Thank you for watching this video, and I would suggest you to improve your reading, to improve your short story writing. You should have a good reading also, so that you can have good ideas. Do subscribe to the English Academy. So here you saw this video. Now 1 second, I would like to show you the other one also. Your online presence makes an impression. Make sure your words are as professional as you. Hello and welcome to the extra class presents addition quotient. Okay class. Writing section, yes. Story writing. तो story writing आपके एग्जाम में पूछी जाती है 10 मार्क्स की and इसकी word limit है 150 to 200 words. Actually, I found some of her tips very nice, though she speaks both in Hindi and English. The tips what she's telling is very good. So please listen to this very carefully. Story writing सबसे आसान है. क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें स्टोरी बनाना ये आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, और अभी से नहीं बचपन से. आप अपने दोस्तों को स्टोरीज बना के सुनाते हो, आप अपने पेरेंट्स को स्टोरीज बना के सुनाते हो, अपने सिबलिंग्स को स्टोरीज बना के सुनाते हो. तो ये जो स्टोरी राइटिंग है इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है. तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि कौन सी चीजें आपने करनी है जब आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हो एंड कौन सी चीजें आपको नहीं करनी. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, स्टोरी राइटिंग का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको फर्स्ट 2 लाइंस गिवन होंगी या फर्स्ट 2-3 लाइंस गिवन होंगी, और उसके बाद आपको स्टोरी को बिल्ड करना है.
ठीक है, क्वेश्चन तो इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है जब आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो स्टोरी राइटिंग करते टाइम पे जो फर्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको नहीं करनी, वो ये कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो सुपरनैचुरल नहीं होने चाहिए। सुपरनैचुरल मतलब कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, ज़ॉम्बीज। आई नो ये मूवीज में या टीवी सीरीज में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, लेकिन आपकी जो एग्जामिनर है वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि आप थोड़ी मेच्योर स्टोरीज लिखो, इमेच्योर ना लिखो। तो इसीलिए कोशिश करना कि जो आपके कैरेक्टर्स हो वो वेल डिफाइंड हो और लॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट आता है डू नॉट ट्राई टू एंड इट विद द मॉरल। अब आपकी जो स्टोरी होनी चाहिए वो अपने आप में एक मैसेज डिलीवर करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टोरी लिख रहे हो और एंड में लिख रहे हो सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इतना एक्सप्लिसिटली नहीं उसको बताना है। ठीक है, मॉरल आपको ऐसे नहीं लिखना है कि द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है डू नॉट मेक इट टू लॉन्ग। अब जो स्टोरी है कोशिश करना कि आप अपने दिमाग में पहले ही जो स्टोरी आप बनाने वाले हो उसको स्ट्रक्चर कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको लिखते जाओ उसको खींचते जाओ, क्योंकि 150 to 200 जो वर्ड्स की लिमिट है ये एक्चुअली काफी कम है जब आप स्टोरी राइटिंग की बात कर रहे हो। एंड जो आपका एग्जामिनर है उसकी जो अटेंशन है वो सिर्फ उतने वर्ड्स तक ही जाएगी, उसके बियॉन्ड जो आप लिखोगे उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। एक, क्योंकि एक तो आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर दोगे, और बी वो बोरिंग हो जाएगी, इतनी लंबी स्टोरी कोई नहीं पढ़ेगा। इसीलिए अपने दिमाग में पहले उसको फॉर्म कर लेना, स्ट्रक्चर कर लेना। ठीक है, तो ज्यादा लॉन्ग मत लिखना, कहीं लिखते लिखते आप खुद ही भूल जाओ कि एक्चुअली आप बना क्या रहे हो, स्टोरी को लिख कैसे रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी मत करना, 150 to 200 वर्ड्स ओनली, इतना ही रखना। नेक्स्ट, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप एक इंग्लिश के स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हो, आपको दिखाना है कि आपने ये सारी चीजें प्रैक्टिस करी है जब आप ये बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। तो मेक श्योर इस चीज को दिमाग में रखना कि स्टोरी राइटिंग करते टाइम कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करना। ऐसे वर्ड्स जो आपको लगे जिनकी स्पेलिंग आपको नहीं आती उनको यूज ही मत करो। सेकंड चीज जो यहाँ पे ध्यान में रखो वो ये, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस मत लिखना। मतलब ऐसे सेंटेंसेस मत लिखना जिनकी कोई सेंस ही नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आपके जो एग्जामिनर है वो चेक करेंगे कि 4 मार्क्स आपके किस तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस हैं या नहीं, 5 मार्क्स का आपका जो प्लॉट है वो कैसा है कैसा नहीं, और जो फॉर्मेट है यानी कि जो आपका टाइटल है वो कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना कि स्टोरी राइटिंग करते टाइम पे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस मत लिखना और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो बिल्कुल भी मत करना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। अब चलते हैं उन चीजों की तरफ जो चीजें आपको करनी है जब आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं। सो आप मुझे ये बताओ कि आपको अपना वो फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगता है जो स्टोरी बिना किसी ट्विस्ट के, बिना किसी टर्न्स के, डायरेक्ट क्लाइमैक्स हटा के उसकी जो एंडिंग है वो बता देता है, तो वो फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगता है जो थोड़ा घुमा फिरा के एंड थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट करके एंड थोड़ा सा क्लाइमैक्स क्रिएट करके वो बताते हैं। हमें जनरली वही चीजें अच्छी लगती है जो हमें थोड़ी ट्विस्ट एंड टर्न, थोड़ी क्लाइमैक्स के साथ थोड़ी बिल्डअप करती है हमारी एंजाइटी को, है ना, जिससे हमें और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो इस तरीके की ही आपको स्टोरी राइटिंग करनी है। यानी कि सबसे पहली बात जो आपको स्टोरी राइटिंग करते हुए ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन जो होगा वहां पे आपको एक स्टार्टिंग मिलेगी, एक हेड स्टार्ट मिलेगा कि जैसे फॉर इंस्टेंस वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 सन्स, है ना, इस तरीके से आपको स्टार्ट मिलेगा। तो जब भी आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हो इन योर एग्जाम, हमेशा जो क्लू या जो क्यू आपको मिल रहा है क्वेश्चन में उसी से स्टार्ट करना। एंड रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि इसी तरीके से मार्क किया जाता है। ऑन दिस बेसिस आपकी स्टोरी को 10 में से 10 मिल सकते हैं। तो इसको ध्यान से सुनो, ऐसे स्टार्ट करना। ठीक है, देन सेकंड, इंश्योर क्लैरिटी ऑफ प्लॉट। आपको लिखने से पहले आपके दिमाग में जो उसका प्लॉट है, जो स्टोरी लाइन है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ क्लियर नहीं होगी तो वो पेपर में भी क्लियर नहीं होगी। तो फिर आप लिखते जाओगे until and unless you try to find an end। तो मेक श्योर अपने दिमाग में आप एक छोटी सी स्टोरी ऑलरेडी तैयार कर। अब मैं बताती हूँ कि आइडियल स्टोरी आप कैसे बना सकते हो। देखो, पहले थोड़ा हैप्पी दिखाओ कि सब कुछ अच्छा था, ये सब चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे फिर एक दिन ऐसा हुआ, देन वन डे या देन सडनली, ऐसे करके प्रॉब्लम को क्रिएट करो। ट्राई क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अब एक ट्विस्ट लाने की कोशिश करो। मीनवाइल यहाँ पे जब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, यहाँ पे कोई ट्विस्ट आ गया जिससे जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ गई। अब ट्विस्ट जब पीक पे पहुंच गया, एट दैट टाइम में या जो हमारे हीरो है या आप कह सकते हैं जो इस पूरी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसको उसका सोल्यूशन मिल गया, तो फिर उसको सोल्यूशन पे पहुंचाते पहुंचाते मेक श्योर आप उसके कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं, चाहे वो कोई, ठीक है। एंड देन जब उसको सोल्यूशन मिल जाएगा तो यू एंड योर स्टोरी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि ऐसा नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट शुरू कर देना, हैप्पीली शुरू करो, अच्छे नोट पे शुरू करो एंड देन धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट करो। प्रॉब्लम क्रिएट करोगे उसके बाद एक ट्विस्ट लेकर आओ, ट्विस्ट लेकर आओगे फिर सोल्यूशन तक धीरे धीरे पहुंचो एंड देन आप जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कैरेक्टर ऑफ प्लॉट डेफिनेटली रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए कि कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो इवेंट्स है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इवेंट आपने पहले नहीं बताया, मिस कर दिया बताना, तो आपने वो बाद में बताया जहाँ पे उसका मजा ही नहीं था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ट्विस्ट को आप स्टार्टिंग में ही बता दोगे या क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी को आप स्टार्टिंग में ही बता दोगे तो मजा नहीं आता सुनने में। तो सिमिलरली कोशिश करना एक तो लॉजिकल सीक्वेंस है इवेंट्स की, ठीक है, जिससे लगे कि हाँ वेल स्ट्रक्चर्ड है आपकी स्टोरी, आपने सोचा है इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली लिख दिया। तो लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस वाइज इवेंट होना चाहिए, पहले ऐसा हुआ फिर उसके बाद वैसा हुआ फिर उसने ऐसा कहा वैसा किया, ठीक है। देन लास्ट आता है प्रॉपर कंक्लूजन। कंक्लूजन पे आते आते मैंने आपको क्या बताया कि मॉरल नहीं लिखना, लेकिन कोशिश करना जो कंक्लूजन हो वो प्रॉपर हो, एंडिंग जो हो वो प्रॉपर, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना, इन सारी चीजों से, इन कुछ लाइन से ही आपके जो आपके 10 मार्क्स है वो आ सकते हैं स्टोरी राइटिंग, दैट इज फुल मार्क्स आ सकते हैं इन स्टोरी राइटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने अभी तक आपको फॉर्मेट नहीं बताया, तो फॉर्मेट जैसे कि आपने हर जगह स्टोरीज पढ़ी होंगी, अपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, अपनी बुक्स पढ़ी होंगी, तो आपने देखा होगा टाइटल होता है जो गिवन होता है, एंड टाइटल लिखने के बाद आपको अपनी जो स्टोरी है वो शुरू करनी है। टाइटल आपको बनाना है फ्रॉम योर स्टोरी, व्हिच मींस दैट यहाँ पे दो तरीके से इसको किया जा सकता है, या तो आप पहले ही अपना टाइटल डिसाइड कर लो क्वेश्चन पढ़ के कि हाँ इस स्टोरी में ये हो सकता है तो मैं ये बनाऊंगा या बनाऊंगी और ये इसका टाइटल होगा, कुछ मींस आपने पहले ही थिंक कर लिया, या फिर आपने अपने दिमाग में स्टोरी सोच ली है एंड देन आपको पढ़ के लगा कि हाँ इसका ये टाइटल हो सकता है, तो आप वो टाइटल इसको असाइन करना, उसके 1 मार्क्स होते हैं। तो 1 मार्क्स है आपके टाइटल के, जो कि आपका फॉर्मेट है, बस बाकी तो आपको स्टोरी ही लिखनी है, ठीक है, पैराग्राफ्स में लिखना कोशिश करना ताकि नीट एंड क्लीन लगे, ठीक है। देन 4 मार्क्स है आपके किस चीज पे, आपके प्लॉट के, किस तरीके से क्लैरिटी है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, कैरेक्टर्स जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद आप कोशिश करना क्या 5 मार्क्स तो आपको मिलने चाहिए किस चीज पे, आपके ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स जो है उनको आप यहाँ पे इंक्लूड करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना स्टोरी राइटिंग करते टाइम, एंड आई एम श्योर 10 में से 10 मार्क्स आपके इसमें डेफिनेटली आएंगे। नाउ आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो हमें यहाँ पे लाइंस ही नहीं बताई जो हम स्टोरी राइटिंग में लिख सकते हैं। देखो स्टोरी राइटिंग में मैं आपको लाइंस तो नहीं बता सकती, आप कौन सी लाइंस लिख सकते हो, हाँ मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, वैसे स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। लाइंस में इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि क्वेश्चंस जो है एट द स्पॉट या ऑन द स्पॉट की आपको जो स्टोरी है क्वेश्चन को पढ़ के बनानी होगी, तो वो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती, बट हाँ मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अपने जो प्रीवियस ईयर्स है उनको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, क्योंकि हो सकता है जो स्टोरी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हो, जो शायद आपको 2-3 साल पहले पूछी गई हो, या जो आपके सॉल्व पेपर्स हो उनमें हो, तो वो ठीक है, तो रिपीटेड आ सकती है। तो फॉर दिस आपको क्या करना होगा, आप ऑनलाइन स्टोरीज पढ़ो, बुक्स पढ़ो, एंड कोशिश करो कि अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी बैठ जाए, कि आप अगर आपको कोई भी स्टोरी आएगी तो आपको किस तरीके से उसको स्टार्ट करना है, एंड एक प्रॉब्लम जैसे क्रिएट करनी है, कैसे आपको उसको एंड करना है, एक स्ट्रक्चर जो है आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाए, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि 150 से 200 वर्ड लिखना इतने सारे प्रश्न। Yes. See, basically, what happens in story writing is what she told us, structure. If you're clear, then it is free flowing.
Main is how you present the story. Sometimes even a simple story can be told in such a nice way. She gave such a nice example that in the class also we listen to that child who has lots of stories to tell us, intriguing things, isn't it? Interesting ho, थोड़ा मस्त हो, and नमक मिर्च लगा के जो बोलते हैं उनकी बातें ज्यादा याद रह जाती है ना. And people who are so simple तरीके से बोल के चले जाते हैं उनका मजा ही नहीं आता. इवन इन द क्लास इफ यू सी, वो कैरेक्टर क्लास का बहुत पसंद आता है जो मस्ती मारता है, उसकी कई बार टोन पसंद आती है, या सम द स्टाइल इन व्हिच ही इज स्पीकिंग और बिहेविंग, दैट अट्रैक्ट्स अस. So now you understand even the movies, if you see, which type of movies do you watch? You have your personal choice, of course, but what you like is something different. If the same type of movie is made, 10 same type of movies are made, you are not going to watch it. If suddenly some movie gets hit or something, why do you watch it? In English, if you see the movies like Mission Impossible and all, why do we like it? Because every time it is different. There are so many parts of this movie, Mission Impossible, but every time we look forward for that movie, be it the Bond movie, because they follow something interesting. You don't know what's going to happen next. And that is what holds the viewer. Viewer होता है देखने वाला, उसको पकड़ के रखता है. That is why he likes the movie, and next time जब उसका sequence आता है तो he goes again and watches. Same is with horror movies and murder mysteries. I'm sure every one of them likes thrillers and mystery stuff and all. So always write such things which are holding you. And what she told, moral should not be there. Ramisha, we used to write moral line in the end. Yes, Archie? ma'am. Yeah. See, you should not write direct moral. She meant to say कि उसके अंदर flow हो जाए. In the end, you can just infuse it. मतलब उसको fuse ऐसा करो कि like, so this is what we see in this story, and this is what the inspiration we get from the story. Instead of mentioning directly moral or underline करना उसको. समझ में आया? तो it should be free flowing. निकलना भी चाहिए, मतलब वो टीचर खुद निकालेगा in the end आपके उससे, but the moral of the story is, जो छोटे बच्चे करते थे वो नहीं करना है. Yes, in the heading it will be on the top, obviously, you know, in the capital letters you have to write the title. And title when you write, so you have to be careful that if you in the middle of the story आपको click हुआ कि हाँ ये title best है मेरी story के लिए, then what you do, leave 2 lines and then start the story. But remember वो 2 lines जो आपने छोड़े थे वो title के लिए थे. Last में वापस जाओ और title लिख दो. Okay, so make it more interesting. And the only persons who do a lot of quickly and get good marks in letter writing is they do extra reading. Not only your textbooks, not only obviously your science and social science textbooks won't give you a lot of stories. Yes, you can get inspired by some king or queen or something, but extra reading and also listening. Whatever you listen on the TV or internet, whatever, see to it that it is good stuff. Okay, ऐसा लिखो जो आपका दिमाग चलाए और फिर आप जोड़ तोड़ करके स्टोरी लिखो. And obviously when you read good, your vocabulary increases. I've been telling this since many years. Probably in 6th also I used to tell you the same thing. And the people who read a lot of things, novels or anything, और क्वालिटी मूवीज देखते हैं, उनके दिमाग में सीन्स बैठ जाते हैं, तो वहां से आप इंस्पिरेशन लेके यू कैन कुक अप सम स्टोरी. एज दे से कुक अप, व्हाट इज एक्चुअली नाउडेज इफ यू सी दिस यूट्यूब एंड ऑल, सो मेनी कुकरी शोज, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस कोविड इट्स बिकम सच अ हिट दैट जस्ट नेट पे डालो आ जाएगी रेसिपी और वो पीपल कीप एक्सपेरिमेंटिंग. दिस इज व्हाट यू शुड डू. जितना आप देखोगे करोगे आपको भी confidence आएगा, yes, when I can do it. And you obviously know it, how stories have been taken to movies, be it the Harry Potter or anything. It's simple by story writing. पहले story लिखी जाती है, फिर उसको एक some director takes it and then he directs it into a movie.
So try your best to read good stuff. Once again, I'll just take your okay. Fine. Now, before we just move forward, I have got some samples, and you must have seen it's written class 10th. So the syllabus is almost the same, and you'll be having the same thing in 10th also. That's why I took out these samples, which were actually part of, I think, 2018-19, such board exam papers. And they are such samples. So what we'll do is, I'm sure you don't want to write them, but at least we can do a reading of it. And these are the same points, if you see. Those same points which we discussed. So we'll start with one solved example. Now, who wants to do the reading of this? Ma'am, I want to read. First, who told? Ma'am, Kinjal. Okay, Kinjal. Yes, Kinjal. Kinjal, start reading the first one. From here, right is Solved examples of short story writing. Writing a short story in 200 to 50 words with the help of the cues given below. Give a suitable title to the story. Going to Mumbai by train to attend the marriage of a friend. Got stuck in a traffic jam. Reached the railway station late, boarded a wrong train. Realized after 2 hours, now you. A series of unfortunate events. I sat down with relief as I ticked off the last task in the checklist. I wanted everything to be perfect as it was my best friend's marriage in Mumbai. The alarm rang next morning. I woke up in excitement and one second, Kinjal. I'll just stop my mic. Is it disturbed? Now you read, okay? I'll just put the screen back. The alarm rang next morning. I woke up in excitement and booked a cab to the railway station. Everything was going perfectly until I got stuck in a traffic jam. I reached the railway station late, but on the side of the train, still waiting on the platform. I hurried and somehow managed to get into the train. I breathed a sigh of relief and got comfortable. It was only when ticket collector came I realized that I had been in the wrong train for 2 hours. I panicked and deboarded the train at the next station. I tried booking a ticket for the next train to Mumbai, but there was no availability. On coming back from the ticket counter, I realized that my luggage was missing. Even after hours of finding and reporting it, there was no trace of it. I got tired, and lost hope. Tried booking a cab with the minimal amount I was left with in my pocket. The cab couldn't reach on time as it was raining heavily. Disheartened, I finally walked my way to the nearest hotel, contacted my parents, and recited them the series of unfortunate events that happened during the day. Alas, I couldn't even make it to my best friend's wedding. Yes. See, if you see here very carefully, and only the one that you did tell wrong was, um, one second. I hurried. I breathed a sigh of relief. Breathed, okay?
अगर it is without ed then it is breath, and अगर ed लगा है तो it is breathed. Breathed is sigh of relief का मतलब होता है जैसे आपने ठंडी सांस भरी, oh thank God, हम ऐसे सांस भरते हैं ना, that is called sigh of relief. शांत हो गया मतलब हमारा, जैसे कई बार हमारा हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है जब हम टेंशन में होते हैं, sudden rush of tension or something comes, and when that thing is gone, there's a sigh of relief. Okay, and if you see this carefully, see how the words are being used: panicked, devoted. अब ये vocabulary होती है, minimal amount, and it is a single paragraph. Sometimes you get one single line to start with, and sometimes you get so many this. And cues means actually it is a signal. मतलब आपको जैसे signals दिए हैं छोटे छोटे, and आपको उसको catch करके आगे बढ़ना है. Okay, so it's good now this paragraph. Yes, ma'am. Okay, next I would like Pushkar to read. Ma'am, from the question or Yeah, from the question, the second one. write a story in 200 to 250 words with the help of the cues given below. Give a suitable title to the story. Satish was standing on the balcony watching the last rays of the sun. Loud and angry voices in the street below distracted his attention. He ran down the stairs to see what had happened. The last day. Satish was standing on the balcony watching the last rays of the sun. Loud and angry voices in the street below distracted his attention. He ran down the stairs to see what had happened. His neighbors were again fighting over some parking issues. It was a common scene among the residents of that area. No sooner did he reach there when suddenly the land between the neighbors' buildings started tearing apart. Everyone got frightened. Satish ran back to his house. At this Satish ran, Satish ran back to his house to find his daughter and wife. They were both ready with their emergency baggage. The family got out of the house and started running as fast as they could, passing the falling trees and buildings. Water was penetrating out of the departing land, and everyone was panicking and running in any direction to save their lives when suddenly Satish's daughter fell down. A tree fell over her feet. Satish was trying to help his crying daughter when they both saw a building falling over them. Satish hugged his daughter and shouted at the peak of his voice, when finally woke him up. With sighs of heavy breathing and excessive sweating, Satish went to his daughter's room only to find that everything was fine. He kissed her forehead, went back to his room, and wondered, "Phew, this one really took the life out of me." nice, no? Actually, they started giving it the feel of an earthquake, and till I mean almost 3/4 of the story, I did not come to know that oh, it is a dream. हम भी उसमें इतने engrossed हो गए थे कि what is going to happen? सतीश की बेटी बचेगी कि नहीं बचेगी? Isn't it? For one moment, I was so convinced when Pushkar was reading because I haven't read this. I selected this yesterday in the night and इसको cut paste किया है word form में, and then I put it over here for you people. मैंने कहा लिखोगे तो हो नहीं, so at least we'll do one reading, at least we can do ना, so that you come to know कि this is what is called good stories. देखो it's only one single paragraph and it's so engrossing. Engrossing मतलब इतना आपको engage किया हुआ है उसने कि ओ अब क्या होने वाला है, and in the end you just only say oh it was a dream, and you make it so realistic that see he was excessive breathing. And then he suddenly, when he got up, he went and saw his daughter and he kissed her on the forehead and went back to his room. And last, this expression that, oh, it really took out my life.
isn't it? So if you see कितना मतलब realistic है, and both the stories are totally contrast. It's almost time also. One thing I wanted to know, Pushkar, can you tell me which all chapters we have done in Beehive? Because I have to do with the syllabus. I just want to confirm. Ma'am, Unit 1. Till Unit 4 we have done? Yes, ma'am, till Unit 4. Yes, ma'am. Okay. And supplementary? Ma'am, I think chapter 5. 5. But one chapter is not coming na, in the exam? Yes, ma'am. It's been, Third one or 4. I think it is 4 now. Just confirm it and tell me. Yes, ma'am. Yes. So lesson 1, 2, 3, and 5 we have done. Okay. Fine. At least you can start revising the literature part and all, and now you come to know that even story writing is coming. And we'll see what I'll discuss with Chandra and let you know whether it's a diary or better. Okay. Ma'am, chapter 3 is Romisha, supplementary. of 3 is deleted, na? 3 is deleted. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ishwaran the storyteller. Okay, 3 is deleted and 4 we have done. Yes, ma'am. Okay, fine. Check. Okay. One thing I want any of you, like Pushkar and Romisha, you people can see, check the syllabus again, which we had given you, and tell me exactly in letter writing, because I was under the impression that letter to editor is cancelled. Okay? So if it is not, then I will do a revision of that also. Ma'am, it is written that later on situation is deleted. Letter on situation. Okay. Only that, no? I'll check it out. Fine. Okay. So now it's time also. Take care, you people, and start your revision. We'll be getting at least 15 days, I suppose. Okay? Which chapters will come? जो जितना हमने किया है उतना ही, उससे हो सकता है एक आध कम ही आए. Okay? I am not going to do any new chapter now. जो जितने दिन बचे हैं, I want to give it for revision and grammar and the written part. Okay? And like that day I posted those 2 chapters of literature na, for the weak students. I will be posting another 2 today. Okay? Then ऐसे ऐसे करते करते I will do till supplementary. If you have any doubt, you can see that. And I also want to discuss some extra questions. Okay? Because obviously you will not be getting direct questions. एक आध कोई direct फंस गया तो फंस गया. But उसी question को हम घुमा के देंगे आपके textbook वाले को. ये भी हो सकता है. Even short answers. Okay? An extract will be coming. And maybe instead of 1, you'll have 2 extracts. ये भी हो सकता है. Okay? Ma'am, So, and when is the exam? Is it confirmed? it's in September, for sure. Now it's Okay. first week or second week, that is not sure. Okay? In a day, mostly tomorrow you'll be Ma'am, of getting it. 80 marks or Let's keep our fingers crossed that it is not 80 marks. Okay? Ma'am, it is of 40 marks. I don't have any idea of that. That's to be discussed yet now. Okay? It's time better. Okay? I've got another class. Okay, Sai Ram. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sarah, ma'am. Bye. Take care. Thank you, ma'am.